ஓம் மகாதேவியை நமஹ. இன்னைக்கு நம்ம சௌந்தரிய லஹரியுடைய ஸ்லோகங்கள் 1லேருந்து 100 வரைக்கும் படித்து போட போகிறேன். இதனுடைய ஃபுல் பிளேலிஸ்ட் உங்களுக்கு இருக்குது. எப்படி தனித்தனியாக பதம் பதமாக பிரித்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது. சௌந்தரிய லஹரி ஸ்லோகம் 1. சிவசக்தியா யுக்தோ யதி பவதி சக்தः பிரபவித்தும் ந சேதேவம் தேவோ न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्जादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति. श्लोकं 2. तनीयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्जिः सञ्जिन्वन् विरचयति लोकानविकलम् वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरः संक्षुद्यैनं भजति बसिदोद्धूलनविधिं. श्लोकं 3. अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिचरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिगा जन्मजलधौ निमग्नानां दंश्रा मुररिपुवराहस्य भवति. श्लोकं 4. त्वदन्यः पाणिभ्यामभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया भयात्रातुं धातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकं शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ. श्लोकं 5. हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं पुरानारी भूत्वा पुररिपुमपेक्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा रदिनयनलेहेन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महतां धनुः पौष्पं मौर्वी मधुकरमयी पञ्चविशिखाः वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायो धनरतः तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् अपाङ्गाते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते. श्लोकं 7. क्वणत्काञ्जीदामा करिकळभकुम्भस्तननता परीक्षीणा मध्ये परिणतशरच्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् पाशं सृणिमपि दधाना करतलैः पुरस्तादास्तां नः पुरमथितुराहो पुरशिका. श्लोकं 8. सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरविडपि वाडी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवति चिन्तामणिगृहे शिवागारे मञ्जे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्या कतिजनश्चिदानन्दलहरीं. श्लोकं 9. महीमूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुदमाकाशमुपरि मनोबिभ्रूमध्ये सकलमपि भित्वा कुलपथं सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे. श्लोकं 10. सुधाधारासारैः चरणयुगलान्तर्विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नायमहसः अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमद्युष्टवलयं स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिशिकुलकुण्डे कुहरिणी. श्लोकं 11. चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भो नवभिरभिमूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रत्रिवलया त्रिरेकाभिः सार्धं
तव शरणकोणाः परिणताः। श्लोकं 12 त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः यदा लोकौत्सुक्यात् अमरललनायान्ति मनसा तपोभिर्दुष्प्रापाम् अपि गिरिशसायोज्य पदवीं। श्लोकं 13 नरं वर्षीयांसं नयनविरसं नर्मसुजडं तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः गलद्वेणीबन्धाः कुचकलश विस्रस्तसिचया हठाद्रुट्यत्काञ्ज्यो विगलितदुकूला युवदयः। श्लोकं 14 क्षिदौ षट्पञ्चाशद्विसमधिकपञ्चाशदुदके हुताशे द्वाषष्टिः चतुरधिकपञ्चाशदनिले दिवि द्विषट्त्रिंशत् मनसि च चतुष्षष्टिरिति ये मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम्। श्लोकं 15 शरज्योत्स्ना शुभ्रां शशियुधजडाजूडमकुडां वरत्रासत्राणस्फटिकखडिगा पुस्तकगरां सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सदां सन्निदधते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरीणा फणिदयः। श्लोकं 16 कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचिं भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीं विरिञ्चि प्रेयस्यास्तरुणतरशृङ्गारलहरी गभीराभिर्वाग्भिर्विदधति सतां रञ्जनममे। श्लोकं 17 सवित्रीभिर्वाचा शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः वशिन्याद्याभिस्त्वां सहजननि सञ्चिन्तयति यः सकर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिरुचिभिः वचोभिर्वाग्देवी वदनकमलामोदमधुरैः। श्लोकं 18 तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणि श्रीसरणिभिः दिवं सर्वामुर्वीम् अरुणिमनिमग्नां स्मरति यः भवन्त्यस्यत्रस्यध्वनहरिणशालीननयनाः सहोर्वश्यावश्याः कदि न गीर्वाणगणिकाः। श्लोकं 19 मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य ददधो हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषिते मन्मथकलां ससद्यः संक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगां। श्लोकं 20 किरन्तीमङ्गेभ्यः किरणनिगुरुम्बामृतरसं हृदि त्वामाधत्ते हिमगरशिलामूर्तिमिव यः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिपैव ज्वरप्लुष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारसिरया। श्लोकं 21 तडिल्लेखातन्वीं तपनशशिवैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलां महापद्माडव्यां मृदितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो दधति परमाह्लादलहरीं। श्लोकं 22 भवानी त्वं दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणां इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानी त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्य पदवीं
मुकुन्दब्रह्मेन्द्रस्फुटमकुडनीराजितपताम्। श्लोकम् 23। त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शम्भोः अपरमपि शङ्के हृदमभूत्। यदेतत्त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्यामानम्रं कुडिलशशिचूडालमकुडम्। श्लोकम् 24। जगत्सूते धाता हरिरवतिरुद्रः क्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत् स्वमपि वपुरीश स्थिरयति। सदा पूर्वः सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिवः तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचरितयोर्भ्रूलतिकयोः। श्लोकम् 25। त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता। तथा हि त्वत्पादो द्वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते शश्वन् मुकुलितकरोतं समगुडाः। श्लोकम् 26। विरिञ्जिः पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनं। विदन्त्री माहेन्द्री विदतिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ। श्लोकम् 27। जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचना गदिः प्रादक्षिण्यक्रमणमशनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्। श्लोकम् 28। सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजरामृत्युहरिणीं विपद्यन्ते विश्वे विधिशदमखाद्यादिविशदः कराळं यक्ष्वेळं कबलितवतः कालकलना न शम्भोस्तन्मूलं तव जननि ताडङ्गमहिमा। श्लोकम् 29। किरीडं वैरिञ्जं परिहरपुरः कैडभभिदः कठोरे कोडीरे स्खलसि जहि जम्भारिमकुडं प्रणम्रेष्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनं भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते। श्लोकम् 30। स्वदेहोद्भूताभिः कृणिभिरणिमाद्याभिरभितो निषेव्ये नित्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयनसमृद्धिं त्रिनयतो महासंवर्धाग्नेः विरचयति नीराजनविधिम्। श्लोकम् 31। चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः सकलमतिसन्धाय भुवनं स्थितस्तत्तत्सिद्धि प्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धात् अखिलपुरुषार्थैकखडना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिदम्। श्लोकम् 31। चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः सकलमतिसन्धाय भुवनं स्थितस्तत्तत्सिद्धि प्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धात् अखिलपुरुषार्थैकखडना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिदम्। श्लोकम् 32। शिवशक्तिः कामः क्षितिरथरविक्षीदकिरणः स्मरोऽहं सः शक्रः तदनु च परामारहरयः अमीहृल्लेखाभिर्तिसृभिरवसानेषु खडिदा भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम्। श्लोकम् 33। स्मरं योनिं लक्ष्मीं त्रितयमिदमादौ तव मनोः
निधायैके नित्ये निरवधिमहाभोगरसिकाः भजन्ति त्वां चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षवलयाः शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरभिकृतधाराहुदिशतैः श्लोकं 34 शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् अतः शेषः शेषीत्ययमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयोः श्लोकं 35 मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि त्वमापस्त्वं भूमिः त्वयि परिणतायां न हि परं त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभृशे श्लोकं 36 तवाज्ञाचक्रस्थं तपनशशिकोटिद्युतिधरं परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वं परचिता यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनामविषये निरालोके लोके निवसति हि भालोकभुवने श्लोकं 37 विशुद्धौ ते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकं शिवं सेवे देवीम् अपि शिवसमानव्यवसितां ययोः कान्त्या यान्त्याः शशिकिरणसारूप्यसरणेः विधूदान्तर्ध्वान्ता विलसति चकोरीव जगति श्लोकं 38 समुन्मीलत्संवित्कमलमकरन्दैकरसिकं भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरं यदा लोभादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषात् गुणमखिलमद्भ्योः पय इव श्लोकं 39 तव स्वाधिष्ठाने हुदवहमधिष्ठाय निरतं तमीढे संवर्तं जननि महतीं तां च समयां यदा लोके लोकान् दहति महति क्रोधकलिते दयार्द्राया दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति श्लोकं 40 तडित्वन्तं शक्त्यातिमिरपरिपन्तिस्फुरणया स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिणद्धेन्द्रधनुषं तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणं निषेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनम् ஓம் மகாதேவியை நமஹ ஸ்லோகங்கள் 41லிருந்து 100 வரைக்கும் பார்க்கலாம் ஸ்லோகம் 41 தவாதாரே மூலே சஹசமயயா லாஸ்யபரயா தவாத்மானம் மன்யே நவரசமஹாதாண்டவநடம் உபாभ्या மேதாभ्याम् उदयविधिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्यां जञ्जे जनगजननीमज्जगदिदं श्लोकं 42 गदैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रखडिदं किरीडं ते हैमं हिमगिरिसुते कीर्तयदियः सनीढे यच्छायाच्छुरणशबलं चन्द्रशकलं धनुः शौनासीरं किमितन निबध्नानि धिषणाम् श्लोकं 43 धुनोतुद्वान्तं नः तुलितदलितेन्दीवरवनं खनस्निग्धक्ष्लक्ष्णं चिकुरनिगुरुम्बं तव शिवे यदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसो वसन्त्यस्मिन् मन्ये
വലമഥനവാടീ വിടപിനാം. ശ്ലോകം 44. തനോതു ക്ഷേമം നഃ തവ വദന സൗന്ദര്യലഹരീ പരീവാഹസ്രോതഃ സരണിരിവ സീമന്തസരണിഃ വഹന്തി സിന്ദൂരം പ്രബലകബരീ ഭാരതിമിരദ്വിഷാം വൃന്ദൈർബന്ധീകൃതമിവ നവീനാർഘകിരണം. ശ്ലോകം 45. അരാലൈഃ സ്വാഭാവ്യാത് അലികലഭസ ശ്രീഭിരലകൈഃ പരീതം തേ വക്ത്രം പരിഹസതി പങ്കേരുഹരുചിം ധരസ്മേരേ യസ്മിൻ ദശനരുചി കിഞ്ചൽകരുചിരേ സുഗന്ധൗ മാദ്യന്തി സ്മരദഹന ചക്ഷുർമധുലിഹഃ. ശ്ലോകം 46. ലലാടം ലാവണ്യദ്യുതിവിമലമാഭാതി തവ യത് ദ്വിതീയം തന്മന്യേ മകുടഖടിതം ചന്ദ്രശകലം വിപര്യാസന്യാസാത് ഉഭയമപി സംഭൂയ ചമിതഃ സുധാലേപസ്യൂതിഃ പരിണമതിരാകാഹിമകരഃ. ശ്ലോകം 47. ഭ്രുവൗ ഭുഗ്നേ കിഞ്ചിത് ഭുവനഭയഭംഗവ്യസനിനി ത്വദീയേ നേത്രാഭ്യാം മധുകരരുചിഭ്യാം ധൃതഗുണം ധനുർമന്യേ സവ്യേ തരകരഗൃഹീതം രതിപതേഃ പ്രകോഷ്ഠേ മുഷ്ടൗ ച സ്ഥഗയതി നിഗൂഢാന്തരമുമേ. ശ്ലോകം 48. അഹസൂതേ സവ്യം തവ നയനമർക്കാത്മകതയാ ത്രിയാമാം വാമം തേ സൃജതി രജനീനായകതയാ തൃതീയാ തേ ദൃഷ്ടിർദരദളിതഹേമാംബുജരുചിഃ സമാധത്തെ സന്ധ്യാം ദിവസനിശയോരത്നരചരീം. ശ്ലോകം 49. വിശാലാ കല്യാണി സ്ഫുടരുചിരയോധ്യാകുവലയൈഃ കൃപാധാരാധാരാ കിമപി മധുരാ ഭോഗവതികാ അവന്തി ദൃഷ്ടിസ്തേ ബഹുനഗരവിസ്താരവിജയാ ധ്രുവം തത്തന്നാമ വ്യവഹരണയോഗ്യാ വിജയത്തെ. ശ്ലോകം 50. കവീനാം സന്ദർഭസ്തബകമകരന്ദൈകരസികം കടാക്ഷവ്യാക്ഷേപ ഭ്രമരകളഭൗ കർണയുഗലം അമുഞ്ചന്തൗ ദൃഷ്ട്വാ തവ നവരസാസ്വാദതരളൗ അസൂയാ സംസർഗാത് അലികനയനം കിഞ്ചിദരുണം. ശ്ലോകം 51. ശിവേ ശൃംഗാരാർദ്രാ ദദിതരജനേ കുത്സനപരാ സരോഷാ ഗംഗായാം ഗിരിശചരിതേ വിസ്മയവതി ഹരാഹിഭ്യോ ഭീതാ സരസിരുഹ സൗഭാഗ്യജനനീ സഖീഷു സ്മേരാതേ മയി ജനനി ദൃഷ്ടിഃ സകരുണാം. ശ്ലോകം 52. ഗദേ കർണാഭ്യർണം ഗരുതൈവ പക്ഷ്മാണി ദദതി പുരാംഭേതുശ്ചിത്ത പ്രശമരസവിദ്രാവണഫലേ ഇമേ നേത്രേ ഗോത്രാധരപതികുലോത്തംസകലികേ തവാകർണാകൃഷ്ട സ്മരശരവിലാസം കലയതഃ. ശ്ലോകം 53. വിഭക്തത്രൈവർണ്യം വ്യധികരിത ലീലാഞ്ജനതയാ വിഭാതി ത്വന്നേത്ര ത്രിതയമിദമീശാനദയിതേ പുനഃസ്രഷ്ടും ദേവാൻ ദ്രുഹിണഹരിരുദ്രാനുപരദാൻ രജഃ സത്വം ബിഭ്രത് തമൈതി ഗുണാനാം ത്രയമിവ. ശ്ലോകം 54. പവിത്രീകർത്തും നഃ പശുപതി പരാധീനഹൃദയേ ദയാമിത്രൈർനേത്രൈഃ അരുണധവലശ്യാമരുചിഭിः തതഃ ശോണോ ഗംഗാ തപനതനയേതി ധ്രുവമമും
त्रयाणां तीर्थानाम् उपनयसि सम्भेदमनघम्. ശ്ലോകം 55. നിമേഷോന്മേഷാഭ്യാം പ്രളയമുദയം യാതി ജഗതി തവേത്യാഹുഃ സന്തോ ധരണിധരരാജന്യതനയേ त्वदुन्मेषाज्जातं जगदिदमशेषं प्रलयतः परित्रातुं शङ्के परिहृतनिमेषास्तव दृशः. ശ്ലോകം 56. तवापर्णे कर्णे जपनयनपैशून्यचकिता निलीयन्ते तोये नियतमनिमेषाः शफरिकाः. इयं च श्रीर्भद्रच्छदपुटकवाडं कुवलयं जहाति प्रत्यूषे निशि च विघटय्य प्रविशति. ശ്ലോകം 57. दृशाद्राखीयस्यादरदलितनीलोत्पलरुचा दवीयां संदीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे. अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिर्यता वने वा हर्म्ये वा समकरनिपातो हिमकरः. ശ്ലോകം 58. अरालं ते पालीयुगलमकराजन्यतनये न केषामाधत्ते कुसुमशरकोदण्डकुतुकं तिरश्चीनो यत्र श्रवणपथमुल्लङ्घ्य विलसन् अपाङ्गव्यासङ्गो दिशति शरसन्धानिदिषणाम्. ശ്ലോകം 59. स्फुरद्गण्डाभोगप्रतिफलितताडङ्गयुगलं चतुश्चक्रं मन्ये तव मुखमिदं मन्मथरथं यमारुह्यद्रुह्यत्यवनिरतमार्गेन्दुचरणं महावीरो मारः प्रमथपतये सज्जितवते. ശ്ലോകം 60. सरस्वत्याः सूक्तिः अमृतलहरी कौशलहरीः पिबन्त्याः सर्वाणि श्रवणचुलकाभ्यामविरलं चमत्कारश्लाघा चलितशिरसः कुण्डलगणो धनत्कारैस्तारैः प्रतिवचनमाचष्टैव ते. ശ്ലോകം 61. असौ नासावंशः तुहिनगिरिवंशध्वजपडी त्वदीयो नेदीयः फलतु फलमस्माकमुचितं वहत्यन्तर्मुक्ताः शिशिरकरनिश्वासगलितं समृद्ध्यायत्तासां बहिरपि च मुक्तामणिधरः. ശ്ലോകം 62. प्रकृत्या रक्तायाः तव सुदति दन्दच्छदरुचेः प्रवक्ष्ये सादृश्यं जनयतु फलं विद्रुमलता न बिम्बं तद्बिम्बप्रतिफलनरागादरुणितं तुलामध्यारोढुं कथमिव विलज्जेत कलया. ശ്ലോകം 63. स्मितज्योत्स्नाजालं तव वदनचन्द्रस्य पिबदां चकोराणामासीत् अतिरसतया चञ्चुजडिमा अतस्ते शीतांशोः अमृतलहरीमाम्लरुचयः पिबन्ति स्वच्छन्दं निशि निशि भृशं काञ्जिकधिया. ശ്ലോകം 64. अविश्रान्तं पत्युः गुणगणकथाम्रेडन जपा जपा पुष्पच्छाया तव जननि जिह्वा जयति सा यदग्रासीनायाः स्फटिकदृशदच्छविमयी सरस्वत्या मूर्तिः परिणमति माणिक्यवपुषा. ശ്ലോകം 65. रणे जित्वा दैत्यान् अपहृतशिरस्त्रैः कवचिभिः निवृत्तैश्चण्डांशत्रिपुरहरनिर्माल्यविमुखैः विशाखेन्द्रोपेन्द्रैः शशिविशदकर्पूरशकला विलीयन्ते मातः
तव वदनताम्बूलकबलाः। श्लोकम् 66 विपञ्ज्या गायन्ती विविधमपदानं पशुपतेः त्वयारब्धे वक्तुं चलितशिरसा साधुवचने तदीयैर्माधुर्यैः अपलपिततन्त्रीकलरवां निजां वीणां वाणी निचुलयति चोलेन निभृतम्। श्लोकम् 67 कराग्रेण स्पृष्टं तुहिनगिरिणा वत्सलदया गिरीशेनोदस्तं मुहुरधरपानाकुलदया करग्राह्यं शम्भोः मुखमुगुरवृन्दं गिरिसुते कथङ्कारं ब्रूमः तव चुबुकमौपम्यरहितम्। श्लोकम् 68 भुजाश्लेषान् नित्यं पुरदमयितुः कण्डकवदी तव ग्रीवाधत्ते मुखकमलनालश्रियमियं स्वतः श्वेता काळागरुबहुलजम्बालमलिना मृणालीलालित्यं वहति यदधो हारलतिका। श्लोकम् 69 गले रेखास्तिस्रो गदिगमकगीतैकनिपुणे विवाहव्यानद्ध प्रगुणगुणसङ्ख्या प्रतिभुवः विराजन्ते नानाविधमधुररागाकरभुवां त्रयाणां ग्रामाणां स्थितिनियमसीमा नैव ते। श्लोकम् 70 मृणालीमृद्वीनां तव भुजलतानां चतसृणां चतुर्भिः सौन्दर्यं सरसिजभवः स्तौति वदनैः नखेभ्यः सन्त्रस्यन् प्रथममथनादन्धगरिपोः चतुर्णां शीर्षाणां सममभयहस्तार्पणधिया। श्लोकम् 71 नखानामुद्योतैः नवनलिनरागं विहसतां कराणां ते कान्तिं कथय कथयामः कथमुमे कयाचिद्वा साम्यं भजतु कलया हन्तकमलं यदि क्रीडल्लक्ष्मी चरणतललाक्षारसचनम्। श्लोकम् 72 समं देवी स्कन्दद्विपवदनपीतं स्तनयुगं तवेदं नः खेदं हरतु सततं प्रस्नुतमुखं यदा लोक्याशङ्काकुलितहृदयो हासजनकः स्वकुम्भौ हेरम्बः परिमृशति हस्तेन झटिति। श्लोकम् 73 आमोते वक्षोजौ अमृतरसमाणिक्यकुतुपौ न सन्देहस्पन्दो नगपतिपताके मनसिनः पिबन्तौ तौ यस्मात् अविदितवधूसङ्गरसिकौ कुमारावद्यापि द्विरदवदनक्रौञ्जदलनौ। श्लोकम् 74 वहत्यम्बस्तम्बेरमदनुजकुम्भप्रकृतिभिः समारब्धामुक्तामणिभिरमलां हारलतिकाम् उचाभोगो बिम्बाधररुचिभिरन्तः शबलितां प्रतापव्यामिश्रां पुरदमयितुः कीर्तिमिव ते। श्लोकम् 75 तव स्तन्यं मन्ये धरणिधरकन्ये हृदयतः पयः पारावारः परिवहति सारस्वतमिव दयावत्या दत्तं द्रविडशिशुरास्वाद्य तव यत् कवीनां प्रौढानाम् अजनिकमनीयः कवयिता। श्लोकम् 76 हरक्रोधज्वालावलिभिरविलीडेन वपुषा गभीरे तेनाभिः सरसीकृतसङ्गो मनसिजः
समुत्तस्थौ तस्मात् अचलतनये धूमलतिका जनस्तां जानीते तव जननि रोमावलिरिति. श्लोकम् 77. यदेतत् काळिन्दी तनुतरतरङ्गाकृतिशिवे कृशे मध्ये किञ्चिज्जननि तव यद्भाति सुधियां विमर्दादन्योन्यं कुचकलशयोरन्तरगतं तनुभूतं व्योम प्रविशदिव नाभिं कुहरिणीं. श्लोकम् 78. स्थिरो गङ्गावर्तः स्तनमुकुलरोमावलिलता कलावालं कुण्डं कुसुमशरक्तेजोहुतभुजः रतेर्लीलागारं किमपि तव नाभर्गिरिसुते बिलद्वारं सिद्धेर्गिरिशनयनानां विजयते. श्लोकम् 79. निसर्गक्षीणस्य स्तनतडभरेण क्लमजुषो न मन्मूर्तेर्नारी तिलकशनकैस्त्रोढ्यत इव चिरं ते मध्यस्य त्रुडिततडिनीतीरतुतरुणा समावस्थास्तेम्नो भवतु कुशलं शैलतनये. श्लोकम् 80. कुचौ सद्यः स्विद्यत्तडखडितकूर्पासभिदुरौ कषन्तौ दोर्मूले कनककलशाभौ कलयता तव त्रातुं भङ्गात् अलमिति वलग्नं तनुभुवा त्रिधानद्धं देवी त्रिवलिलवलीवल्लिभिरिवा. श्लोकम् 81. गुरुत्वं विस्तारं क्षितिधरपतिः पार्वतीनिजात् निदम्बादाच्छिद्य त्वयि हरणरूपेण निदधे अधस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषां वसुमतीं निदम्बप्राग्भारः स्थगयति लघुत्वं नयति च. श्लोकम् 82. करीन्द्राणां शुण्डान् कनककदळीकाण्डपडलीम् उभाभ्यामूरुभ्याम् उभयमपि निर्जित्य भवति सुवृत्ताभ्यां पत्युः प्रणति कठिनाभ्यां गिरिसुते विधिज्ञे जानुभ्यां विबुध करिकुम्भद्वयमपि. श्लोकम् 83. पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते निषङ्गौ जङ्घेते विषमविशिखो बाढमकृत यदग्रे दृश्यन्ते दशशरपत्फलाः पादयुगळी नखाग्रच्छद्मानः सुरमगुडशाणैकनिशिताः. श्लोकम् 84. श्रुतीनामूर्धानो दधति तव यौ शेखरतया ममाप्येतौ मातः शिरसि दयया धेहि चरणौ ययोः पाद्यं पातः पशुपतिजडाजूडतडिनी ययोर्लाक्षा लक्ष्मीः अरुणहरिचूडामणिरुचिः. श्लोकम् 85. नमो वागं ब्रूमो नयनरमणीयाय पदयोः तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिरसालक्तकवते असूयत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवनकङ्गेळितरवे. श्लोकम् 86. मृषा कृत्वा गोत्रस्खलनमथ वैलक्ष्यनमितं ललाडे भर्तारं चरणकमले ताडयति ते चिरादन्तशल्यं दहनकृतमुन्मूलितवता तुलाकोडिक्वाणैः किलिकिलितमीशानरिपुणा. श्लोकम् 87.
हिमानी हन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायां निद्राणां निशिचरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमधिसृजन्तौ समयिनां सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित्रमिह किम्. श्लोकम् 88. पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा बाहुभ्याम् उपयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशदि दयमानेन मनसा. श्लोकम् 89. नखैर्नागस्त्रीणां करकमलसङ्कोचशशिभिः तरूणां दिव्यानां हसत इव ते चण्डिचरणौ फलानि स्वस्तेभ्यः किसलयकराग्रेण ददतां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमनाय ददतौ. श्लोकम् 90. ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमाशानुसदृशीम् अमन्दं सौन्दर्यप्रकरमकरन्दं विकिरति तवास्मिन् मन्दारस्तबगसुभगे यादुचरणे निमज्जं मा जीवः करणचरणः षट्चरणताम्. श्लोकम् 91. पदन्यासक्रीडा परिचयमिवारब्धुमनसः स्खलन्तस्ते खेलं भवनकलहंसा न जहति अधस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररणितच्छलादाक्षक्षाणं चरणकमलं चारुचरिते. श्लोकम् 92. गदास्ते मञ्जत्वं द्रुहिणहरिरुद्रेश्वरभृतः शिवः स्वच्छच्छाया खडितकपटप्रच्छदपडः त्वदीयानां भासां प्रतिफलनरागारुणदया शरीरी शृङ्गारो रस इव दृशां दोग्धिकुतुकम्. श्लोकम् 93. अराळाकेशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते गिरीशाभाचित्ते दृशदुपलशोभाकुचतडे भृशं तन्वी मध्ये ऋतुरसिजारोहविषये जगत्रातुं शम्भोः जयति करुणा काचिदरुणा. श्लोकम् 94. कलङ्गः कस्तूरीरजनिकरबिम्बं जलमयं कलाभिः कर्पूरैर्मरदककरन्दं निबिडितम् अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तगुहरं विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते. श्लोकम् 95. पुराराधेरन्तः पुरमसि ततस्त्वच्चरणयोः सपर्या मर्यादा तरलकरणा नाम सुलभा तथा ह्येते नीताः शतमखमुखा सिद्धिमतुलां तव द्वारोपान्तस्थितिभिरणिमाद्याभिरमराः. श्लोकम् 96. कळत्रं वैधात्रं कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्याः को वा न भवति पतिः कैरपि धनैः महादेवं हित्वा तव सति सतीनामचरमे कुचाभ्यामासङ्गः पुरवकतरोरप्यसलुभः. श्लोकम् 97. गिरामाहुर्देवीं द्रुहिणगृहिणीमागमविदो हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनयां तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिस्सीममहिमा महामाया विश्वं
ഭ്രമയസി പരബ്രഹ്മ महिषी. ശ്ലോകം 98. കഥാ കാലേ മാതഃ കഥയ കലിതാലക്തകരസം പിബേയം വിദ്യാർത്ഥി തവ ചരണനിർണേജനജലം പ്രകൃത്യാമൂഖാനാം അപി ച കവിതാകാരണതയാ കഥാ ധത്തേ വാണി മുഖകമലതാംബൂലരസതാം. ശ്ലോകം 99. सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिसपत्नो विहरते रतेः पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा चिरं जीवन्नेव क्षपितपशुपाशव्यतिकरः परानन्दाभिक्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान्. ശ്ലോകം 100. प्रदीपज्वालाभिः दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूतेश्चन्द्रोपलजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणं त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरियम्. ॐ महादेव्यै नमः.